Greetings to everyone. See, for past few months, the day I joined, we have been thinking of that how we can make a difference for the students of Union Territory of Jammu and Kashmir and this region also. After series of meetings with my staff members at SCRT, we came up with an idea that why shouldn't we have a Toykathon. Toykathon originally launched by Honorable Prime Minister of our country in 2021, 5th of January 2021, and is one of those hackathons which gives a chance to all the students or the young entrepreneurs or the young community to come up with ideas to help grow this industry. I'll put in a word for toy industry, where what happens is around about, as far as India is concerned, we have been doing a business of $1.5 billion, and by 2028 we intend to reach the figure of $3 billion US, and for that we need young minds around. Again, another word, why toy industry. Last financial year, the whole economic impression on the US of toy industry was around about $100 billion US, with a generation of employment for more than 5,55,000 people. So you can well imagine how big this industry is. And as our Honorable Prime Minister has regularly been talking about and is very sharp in these regards to look at what new economic avenues could be opened up for our young minds or young entrepreneurs or students. And that's why he started the Toykathon. And taking a cue from that, the UT of Jammu and Kashmir has also plunged into it. SCRT at its own level has opened up this competition for all the 22,000 odd schools of Jammu Kashmir region. In fact, we are inviting applications from the UT of Ladakh also. If they want to participate, they are more than welcome to participate in this. Within this Toykathon, what we are looking at is we want participation for all the schools, be it they are government schools, be whether they are private schools or private schools affiliated with other boards of the country. They are also welcome to come on board and participate in this competition. This competition primarily is going to be held at 3 levels. The first level obviously will be the school level, where schools are going to send their nominations to us after holding up a proper competition, and these will be then selected, and a new competition would be held at the district level, where our diets are going to organize that. And the third level would be the UT level, where we are going to have a whole Union Territory level competition, where the best ideas are going to be selected and rewarded accordingly. We are in talks with various governmental and non-governmental and corporate houses to sponsor certain prizes for our students, to provide them certain support to grow vis-a-vis this Toykathon is concerned. And as far as we are concerned, the finalists would also be, we would be trying to work out with certain strategies of hand-holding them. Toykathon obviously is going to give a unique opportunity to the students of UT, and this competition is going to be at 3 levels, from 6th to 8th and 9th, 10th and 11th, 12th. So these 3 would be the divisions amongst which the competitions would be held. And I look forward to all the schools coming forward and participating in this competition, encouraging their students to come forward and participate in these competitions and try to bring laurels to their own schools, laurels to their own districts, to the Union Territory by participating in these competitions and by coming out with very good ideas. The stakeholders, especially the people who are in charge at the helm of affairs in the schools, that's principals or their managing directors or the owners, and to the zonal heads or our diet principals, to all these stakeholders, my message is that this is a unique opportunity, and we are living a dream, we are trying to build a dream, and we want proper things to be undertaken within the Union Territory of Jammu and Kashmir vis-a-vis innovation, incubation and startups is concerned, and Toykathon is one of those steps. So I would want all of you to come forward and motivate young minds to participate in this. SCRT Jammu Kashmir نے ریسنٹلی
12 मई 2023 को एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है टाइकाथॉन 2023, जिसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ एंड रिवाइवल ऑफ लोकल हेरिटेज। इसके लिए टारगेट ग्रुप जो बच्चों का हमने लिया है वो 3 है। एक तो क्लास 6 to 8, दूसरा है 9th क्लास एंड 10th क्लास, तीसरा है क्लास 11th एंड 12th। और इसको जो हमने प्रोसेस मैकेनिज्म रखा है, पहले स्कूल से सिलेक्शन होके बच्चे, हर स्कूल से 3 से 5 बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं, वो कंडक्ट करना है, जो हेड ऑफ स्कूल होगा वो कंडक्ट करेगा वो प्रोसेस। उसके बाद सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, वो डाइट के पास रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट के बाद एनालिसिस करके डाइट में एक फिज़िकल कंपटीशन इनका कराएंगे। तो वहाँ से जो सिलेक्शन प्रोसेस में आगे आएंगे बच्चे, उनको हम यूटी लेवल पे कराएंगे। उसके बाद बहुत सारे हमने प्राइजेज़ रखे हैं और मेडल्स रखे हैं, तो उसमें बच्चों को बहुत सारी चीज़ें भी मतलब फॉर देयर एनकरेजमेंट दिए जाएंगे। तो आगे चलकर उन बच्चों को हम सर्टिफिकेशन भी देंगे, और जो खासकर इस मिशन को आगे करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें डायरेक्शन दी गई है ऐसी चीज़ें करने के लिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी हैं, तो उस हिसाब से हम रिक्वेस्ट करते हैं हर जो भी हेड ऑफ स्कूल है, चाहे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी, अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉम्प्लेक्स हेड्स एंड क्लस्टर हेड्स, वो उनके हेल्प के साथ इसमें अच्छी तरह हर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके आगे चलाएं। वेजिटेबल गार्डन भी बना सकते हैं, मोर ओवर मशरूम भी ले सकते हैं, एपीकल्चर भी ले सकते हैं। ये एक सब्जेक्ट भी होगा और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी और डायरेक्टली इसकी एप्लीकेशन भी होगी। With us Samoon sir. He will talk on Toycathon, what are the key guidelines, and especially for HOIs who have to lead innovations in schools. Discussing this Toycathon, Fayaz sir, I would like to the role of art and vocational education. Yes sir, that's the best part. Yes, yes. हम जब यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन हो गई, SCRT जब बनाया गया, तो यहाँ पर जो विंगें हो गई, तो उसमें एक विंग इम्पॉर्टेंट विंग जो शामिल की गई वो आर्ट एंड वोकेशनल एजुकेशन में बनाई गई। तो इसके ज़रिए से हमें बहुत सारे वर्कशॉप्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो NCERT और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से मिले। तो NEP 2020 का जो फोकस है, मेन फोकस जो मेन थ्रस्ट है वो है रीइमेजिनिंग ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विद मेन एजुकेशन, विद जनरल एजुकेशन। दैट यू वांट टू से सर कि हम लिंकेज करना चाहते हैं जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन और जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको हम लिंक करना चाहते हैं वोकेशनल एजुकेशन के साथ। तो विजन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि हम इंडिया को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना चाहते हैं ताकि इसको एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकें। इस मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए ज़रूरी बात यह है कि हम वोकेशनल एजुकेशन की तरफ थ्रस्ट दे सकें, ताकि हमारे जो सबसे बड़े विजन्स हैं, हमारे जो बड़े प्रोग्राम्स हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है या आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम है, फयाज साहब ने अभी ये मतलब वजाहत की पहले, तो इस प्रोग्राम को हम अगर कामयाब बनाना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन की तरफ राग़िब करना होगा। तो इस सिलसिले में जो सर इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, असल में एक स्कूल लीडर का काम है पहले मेक इन इंडिया को समझना, आत्मनिर्भर भारत को समझना, तब जाके वो इन बच्चों को मेंटरिंग कर सके। ऑलरेडी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सर आपने जिक्र किया है कि प्रोवोकेशनल एजुकेशन, हमारे यहाँ वोकेशनल एजुकेशन 9th क्लास से स्टार्ट है, 6th से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट है। सर उसके लिए आपने मतलब वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर। सबसे बड़ा जो हमारा ये है, इसमें हमारे HIOs का रोल है कि हम बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन की तरफ राग़िब कर सकें। तो इस सिलसिले में हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, ऐसे वर्कशॉप्स किए जिसके ज़रिए से हमने तकरीबन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे डाइट्स के ज़रिए से एक रिसोर्स पूल खड़ा किया हुआ है, जिन्होंने बाद में हमारे प्रोग्राम्स को
ڈسٹرکس میں ڈائٹس کے ذریعے زونل لیول تک کیا، اور ہمارے اس وقت جو فگرز ہمارے پاس ہیں، جو ٹرینڈ ٹیچرز ہمارے پاس ہیں، ووکیشنل ٹرینڈ ٹیچرز آرٹ ایجوکیشن میں، ووکیشنل ایجوکیشن میں، وہ آلموسٹ ان کی تعداد 800+ ہے. سر دیٹس اے اچیومنٹ فار اسپیشلی میری ریکویسٹ رہے گی تمام کمپلیکس ہیڈس کو، تمام اسکول ہیڈس کو، کہ وہ ان جو ٹیچرز آلریڈی ٹرینڈ ہیں، جو لوگوں نے سر نے ایک کیسکوڈ موڈ میں ٹرینڈ کیا ٹیچرز کو، ان کی ہیلپ لے لے اس ٹوائے کیتھن کو ایک سکسیسفل ایونٹ بالکل بنانے. یہ جو ہم نے آلریڈی ان کو ٹرین کیا ہوا ہے، ان ٹیچرز کو، جیسے فیاض صاحب نے کہا، کو جو ٹائی کیتھن آج چل رہا ہے، اس کو میں لنک کرنا چاہتا ہوں. انہی ٹیچرز کا آج یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، رول بنتا ہے، وہ اس ٹائی کیتھن کو جو ہے ایک سکسیسفل یہ بنائیں. جس طرح سے ہم جو ہمارا آرٹ فیئر رہا تھا، ٹوائے فیئر، نیشنل ٹوائے فیئر 2021، اس میں ہمارے جو ٹوائز نیشنل ڈیش بورڈ کے لیے گئے تھے، وہ 21 میں سے 19 ہمارے شارٹ لسٹ ہوئے تھے. لیکن کووڈ کی وجہ سے بدقسمتی سے ہمارا جو یہ وہاں پر اسٹال نہیں لگا دہلی میں. لیکن اب کی بار جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں پرشن سنگھ منہاس سر، انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح سے ہم ان بچوں کو یو ٹی لیول کے بعد نیشنل لیول تک لے جا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کی ایفرٹس کے وی اپریشیٹ دیٹ. صحیح کولیبریشن کے بارے میں، یہ کولیبریشن کی بات جب آ رہی ہے، تو کولیبریشن میں ہم نے اپنے جو پروگرامز ہیں ان کو کولیبریٹ کیا اسکل ڈیولپمنٹ آف JNK اور ITIs کے ساتھ. بہت سارے ایسے پروگرامز ہم نے یہاں پر کیے جس کے ذریعے سے ہمارا جو لوکل ٹریڈ ہے یہاں پر، ہینڈ ایمبرائڈری کا، پیپر ماشی کا، ووڈ کارونگ کا، جو ڈائنگ ہمارے یہاں پر ہیں، رجحان ہمارے نوجوانوں کا وہاں کی طرف نہیں ہے، اس کو ایک ریوائول دینے کے لیے، اس کو ایک نئی جہت دینے کے لیے ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کا تھیم ہے آج کی جو ٹوائے کیتھن، جو SCRT ڈائریکٹر نے ریسنٹلی اناگریٹ بھی کیا ہے ٹوائے کیتھن کو. اس میں ایک پہلا یہ تھیم ہے کہ ہمارا ریجنل کلچر اور ہیریٹیج، اس پہ ہمارے بچے ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹوائز بنا سکتے ہیں. یس سر. فیاض سر، میں یہاں پر ایک خوش آئند بات آپ کو کہوں گا کہ ہم نے ان پروگرامز کے ذریعے تقریباً 200-300 کے قریب ٹیچرز کو ٹرین کیا، جنہوں نے پیپر ماشی اسکل سیکھے، جنہوں نے اس طرح سے ووڈ کارونگ کی طرف اپنا رجحان بڑھایا، اور ہینڈ ایمبرائڈری کی طرف انہوں نے یہ کیا. لیکن ٹائم چونکہ ہمارے پروگرامز کا کم ہوتا ہے، بار بار ہمیں فیلڈ سے یہی مطلب یہ آتی ہیں، ریکویسٹ آتی ہیں کہ ان پروگرامز کو 3 دن کے بجائے آپ 10 دن کا رکھیے، ریزیڈینشیل رکھیے، تاکہ ہم اس میں پوری یہ کر سکیں. لیکن ایک سر آپ کے ایگزامپلز ہیں فیلڈ میں، لائک ہم ایک جو وائرل ہیں ہمارے سوشل میڈیاز پہ، ریاض صاحب ہیں کلگام سے، جی سر، طارق صاحب ہیں، جن لوگوں نے آپ کی جب آپ نے ان کو کیپیسٹی بلڈنگ یہاں دی، ٹریننگز دی، تب جا کے دے آر تھنکنگ آؤٹ آف باکس اینڈ ہیلپنگ اسٹوڈنٹس ٹو میک ٹوائز. سر جو تھیمز کی بات ہم کر رہے ہیں سر، اس میں 2 اہم تھیمز ہیں آؤٹ آف دیز 9 تھیمز. ایک ہے جو ہمارے آج کل G20 کا ایک ہر انڈیا ہیز اٹینڈ پریزیڈنسی ان G20، اس میں ایک انوائرمنٹ کا بڑا کنسرن ہے. یس سر. سر میں آپ سے چاہتا ہوں کہ بچوں کو آپ کیسے ہم گائیڈ کریں تاکہ وہ اس میں میکسیمم پارٹیسپیٹ کرے اور اچھے انوویٹیو آؤٹ آف باکس وچ ہیز سم سوشل ہیومن ویلیوز وچ از آکوپیشن بیسڈ، سر وہ کیسے گائیڈ کریں گے؟ تو جس طرح سے آپ نے کہا سر، چونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو ریسائیکل میٹیریل ہے انڈیا میں ہے بڑا ہوا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً بہت ساری جگہوں پر اس کے ڈمپس لگے ہوتے ہیں. اس کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ بچوں کو ہم انہی چیزوں سے جو را میٹیریل وہاں پر پڑا ہوئے ٹائز بنانا سکھائے. اس سے ایک ہمارا ایک بہت بڑا مقصد جو سوچھ بھارت کا مقصد ہے وہ پورا ہو سکتا ہے. بچے صفائی کی طرف جا سکتے ہیں، اس کو پراپر ڈمپنگ کر سکتے ہیں. ہم اسکولز میں بھی ایک یہ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم اپنے سوسائٹی میں ہمارے جو وہاں پر میونسپل ایریاز ہیں یا ہمارے پنچایتی ایریاز ہیں، وہ بھی اس میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. بچوں کو ہم ٹرین جب کریں گے کہ ہاں وہ کس طرح سے ان کو پراپر ڈمپنگ کرے، تو اس سے ہمارا انوائرمنٹ ہی ہوگا. نہ یہ اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ ان جو مٹیریل پڑا ہوا ہے اس سے وہ لو کاسٹ نو کاسٹ جو ٹائز ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. ایک طرف سے ہمارا انوائرمنٹ بھی یہ ہو سکتا ہے اور دوسری طرف سے جوائے فل وہ بچہ بھی. اس میں ہمارے HOIs کو کافی بینیفٹ ہے. ایز اے وی ہیو ٹو تھنک ہولسٹک. یس بات کریں. ہمارا کلچر جو ہے وہ یونیک ہے.
इंडियन कल्चर ये डाइवर्स कल्चर है, यूनिटी इन यूनिटी डाइवर्सिटी। एंड डाइवर्सिटी है यहाँ पर हर कौम, हर मज़हब, इसके लोग रहते हैं। तो कल्चरली अगर हम अपने रीजन की बात करें, ये बहुत जो है रिच कल्चर हमारा है। इवन ये कहा जाता है, जब हम यहाँ की संस्कृति की बात करें J&K की, तो कल्हना की जो राज तरंगनी है उसमें भी इसका ये कहा गया है। इवन जो कश्मीरी लैंग्वेज है या हमारी जो बाकी लैंग्वेज हैं यहाँ की, तो इसका एक बहुत हिंदी डोगरी है, पंजाबी है, या इसका एक बहुत मतलब किरदार रहा है हमारे इसमें। जो कल्चरल इतिहास में ये है कि हम वैल्यूज़ दे सकते हैं बच्चों को। जो थीम भी है एक है, मतलब सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज, सोशल एंड ह्यूमन, इन टॉयज के जरिए से हम बच्चों को सोशल वैल्यूज़, सोशल कस्टम हेरिटेज के बारे में, जैसे हमारे सिंबल है सर टूरिज्म की शिकारा, यस या सर हमारी कांगड़ी है, बिल्कुल उसमें हम एनवायरनमेंट का भी ये ले सकते हैं। इवन साथ साथ हमारा कल्चर, लोटस है हमारा, या यस लोटस है। तो इसी तरह से हम बच्चों को वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। सपोज अगर कोई बच्चा ऐसा होगा कि जब वो टीचर को देखेगा, अगर हम सपोज बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बुज़ुर्ग लेडी वहाँ पर आई या लेडी होगी, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा खड़ा हो जाता है, उसको वो ऑफर करता है अपनी सीट बैठने के लिए। तो ये टॉय फॉर्म में ये टॉय फॉर्म में आइडियाज़ को, इनोवेशंस को टॉय फॉर्म। सर जाते जाते आप हमारे HOIs को क्या मैसेज देना चाहते हैं, सो दैट वी कैन मेक दिस इवेंट ए सक्सेसफुल इवेंट इन टर्म्स ऑफ पेडागोजी, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग बर्डन फ्री टीचिंग लर्निंग एटमॉस्फेयर, जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिपीटेडली कहती है कि बर्डन फ्री, जॉयफुल थ्रू गेमिंग। तो व्हाट इज द मैसेज टू ऑल द स्कूल लीडर्स अक्रॉस J&K और अक्रॉस इंडिया? डॉक्टर फयाज सर, तो आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जो HOIs हैं, मेन उन्हीं का रोल यहाँ पर बनता है। तो हम देखते हैं तभी वो कामयाब हो सकता है ये प्रोग्राम, जब हमारे फील्ड जो हमारे जितने भी 28,000 पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें और बच्चों को वो एक एनवायरनमेंट दे दें, जिससे बच्चे इस प्रोग्राम के ज़रिए से आगे 5-10 साल के बाद वोकेशनल एजुकेशन की तरफ उनका रुझू हो, और फिर उससे हमारा जो विजन है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो एट द एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द HOIs जो बिलो मेंशनड लिंक है उसमें द कंसर्नड जो हमारे ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं ऑन आर्ट एंड वोकेशनल एजुकेशन, दे कैन मेंटर योर स्टूडेंट्स, दे कैन गाइड योर स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग द बेस्ट creative out of box toys within these 9 themes. So we hope that this event will definitely be a service to the nation as a whole.